students, welcome back to my lectures of class 11 physics. We are studying our chapter motion in a plane. In the previous video we have started our circular motion and we have studied about the angular displacement. Now we have another term that is related with the angular displacement, that is the angular velocity. अब यहाँ पर ये भी एंगल से ही डील करता है. इसका मतलब ये जो एंगुलर वेलोसिटी इट इज अगेन अ काइंड ऑफ एक्सियल वेक्टर. अब हमारे पास जैसे हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पर इजीली एंगुलर वेलोसिटी को भी समझ सकते हो. ओके, जैसे हमारे पास नॉर्मली जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. In the same way here for the angular velocity we have angular displacement upon time. So here the angular displacement of the object moving around a circular path is defined as the time rate of change of its angular displacement. मतलब किस तरह से वो angular displacement time के साथ change होता है, that is called as the angular velocity. Okay, now here we are considering example that we have an object which is moving in the clockwise direction and that is from point Q to point P and it have traced an angle theta and the radius of that circle is small r. First of all here this angular velocity that is represented by omega. This is the symbol for omega, that is OMEGA. W को थोड़ा सा आप कर्ल करोगे तो हमारे पास क्या सिंबल आ जाएगा, that will be omega. Okay, now what will be its formula? जो हमने यहाँ पर देखा द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं दिस ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल ट्रेस्ड बोथ आर सेम थिंग. नाउ हियर दिस एंगल ट्रेस आई कैन सिंपली राइट इट एज थीटा. जो हमारे पास यहाँ पर थीटा है और कितने टाइम में वो एंगल बना है या फिर फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट पी कितने टाइम में वो एंगल ट्रेस हुआ है, दैट इज टाइम टी. अब हम इसको यहाँ पर डिफरेंशिएशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज डी थीटा बाई डी टी. अगर ये एंगल छोटा है तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा, दैट इज चेंज इन दैट स्मॉल एंगल एंड द चेंज whatever the change is taking place in that time, that is dt. So here this is the formula, that is simply omega is equals to theta by t. अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है तो इसकी यूनिट भी होगी. Here we have theta by t. थीटा की यूनिट क्या है, रेडियन, और टाइम की क्या है, सेकंड. So here its unit will be radian per second. And here we can also write its dimension formula. अब यहाँ पर रेडियन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. दिस इज नॉट दी फंडामेंटल यूनिट. हाँ, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होती है और उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. सो हियर वी हैव ओनली सेकंड. तो हम यहाँ पर सिर्फ सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं एंड दैट इज पर सेकंड. मतलब यहाँ पर m0 l0 और t माइनस 1. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी. ओके, नाउ हियर व्हाट विल बी द डायरेक्शन. अब यहाँ पर हमारे पास जो भी एक्सियल वेक्टर है, सभी एक्सियल वेक्टर्स के लिए जो डायरेक्शन है इट विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. In the previous video we have seen that the direction which we have found from the right hand rule that was perpendicular outwards and perpendicular inwards. Now here the direction can be same, that is perpendicular outwards and inwards. अब यहाँ पर लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि perpendicular upwards और perpendicular downwards direction कैसे हो सकता है. हमारे पास यहाँ पर जो ये मोशन है ये इस प्लेन में हो रहा है. मतलब यहाँ पर इससे पहले वाले में क्या देखा था हमने कि जो प्लेन था दिस वॉज दी प्लेन, बट नाउ वी हैव दिस प्लेन. यहाँ पर ये प्लेन कुछ इस तरह से और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ओके, सो हियर वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज द डायरेक्शन इन विच दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड हियर वी विल अज्यूम दैट द रेडियस इज स्मॉल r and the angle traced that is here theta. Here we can assume point P and point Q. Now here we will find the direction of this angular velocity. Okay, now here we will use our right hand and if this plane is this one then we have to curl the fingers in this way. मतलब यहाँ पर ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो हमें भी हमारी फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है. Then the direction of this and that represents the direction of the angular velocity. अब यहाँ पर क्या है, this angular velocity its direction will be perpendicular upwards. Okay, अब यहीं पर इसका exactly opposite case क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाए. Here this is the direction. Okay, now here we'll assume the radius to be small r and the angle is traced is theta. Now here we'll again use the right hand thumb rule. We have to curl the fingers in exactly opposite direction. Here यहाँ पर ये ऐसे पॉसिबल नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने हाथ का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. So here we have to curl the fingers in this direction and direction of thumb represents direction of angular velocity. So here in this case direction is perpendicular downwards. ये ओमेगा हो गया. So it is here perpendicular upwards and here it will be perpendicular downwards.
So this is how you can find the direction, that is direction perpendicular upwards and perpendicular downwards when the plane itself is getting changed. So this is all about the angular velocity. So now after looking at the angular velocity, we'll derive the relation between linear and angular velocities, because whenever an object is moving in a circular path, वहाँ पर कहीं न कहीं वो linear distance भी travel करता है और angular distance भी travel करता है, तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में relation find कर सकते हैं. For that we'll assume that we have an object which is moving in the circle, और यहाँ पर जो radius है of that circle is r, and the object is moving from point P to point Q, and here again this is radius r, and we'll assume that the angle traced by that object, that is d theta, small angle, and that d theta angle is traced in the time dt. Okay, now here first of all we'll find the angular velocity. Angular velocity हम कैसे find कर सकते हैं? This omega is equals to d theta by dt. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं this angle d theta is equals to omega dt. Okay, that is about the angular velocity. Now here we have to find the linear velocity. Now what this linear velocity is, that is simply displacement upon time. लेकिन यहाँ पर displacement क्या है? When the object is moving from point P to Q, that curved path length, that is called as the displacement. तो यहाँ पर P से Q तक की जो distance है, हम उसको consider कर लेते हैं dl. Okay, so this is the displacement, and the time in which the object is moving from point P to Q, that is same as dt. तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा? That is displacement upon time. Here the displacement is dl and the time is dt. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास dl कितना हो जाएगा? That is v dt. Okay, now we have to find the relation between linear velocity and angular velocity. मतलब ओमेगा और v के बीच में रिलेशन निकालना है. मतलब यहाँ पर d थीटा और dl दोनों के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए. And we have a relation, that is angle theta is equals to arc upon radius. Okay, so I can write this angle d theta, this arc, that is dl by radius r. This formula is related to here, that is d theta, dl and the r is the radius. और हमारे पास यहाँ पर d theta की वैल्यू है, we have this dl, so we can put these two values here in this equation. I can write this d theta omega dt is equals to dl, that is v dt by r. दोनों तरफ से क्या है, dt कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं this v is equals to r omega. So here we have a relation between the linear velocity v and the angular velocity omega, that is v is equals to r omega. And this is a very, very important relation. This you have to remember. Okay, so here we have the relation. Now what is the direction? हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन तो हम पता लगा सकते हैं बट बाय राइट हैंड रूल. यहाँ पर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, in that case it will be found by right hand rule. अगर ये anti-clockwise direction में, then that is perpendicular outwards. Now what about the direction of this linear velocity? When any object is moving in circular path, then the direction of the linear velocity is in a tangential direction of that path. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है तो यहाँ से जो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा that will be the direction of that linear velocity. Okay, so here this is all about the angular velocity and the relation between linear and angular velocity.